Hello and welcome to the Pitchside Studio. And what do you know? Who do we have here? You can see right here, our studio sparkling moment. Zainab Abbas is here. Zainab, where have you been? Well, I've been here. I've been watching all the action from home. Been loving all the games. It's been extremely exciting. And I think now we're reaching the business end of the tournament, so I'm even more excited. But I think it's a full house that we have here. It's only fair to introduce the guests that we have, Mr. David Gower and Bazil Khan. David, how are you? And looking forward to this, aren't you? I'm very well, which I'm very happy to report. I'm noticing there's a little bit of noise around us, which I'm guessing must be because Lahore are playing yet again on home turf. We've seen it the last few games that the Qalandars have played here. The atmosphere with everyone allowed in the stadium has been so much bigger and better. And if anything lifts aside, it is having support like this. It was always pin drop silence over here. I mean, it's because she is here they're making the noise. I mean, otherwise we had no problems whatsoever. I'm telling you. What are you saying, David? Absolutely. And But David's has to be distributing those, what do you call it? It's a difficult word. Not the bugle, it's called van something or vag something, I don't remember. David's not going to help me, has he? I have a quick question right here, and that goes to Bazil. Now, this is a big event for Peshawar and for Lahore Qalandars because this decides where do you finish. You could have a 1-2 finish and 2 bites at the cherry. How do you see this encounter for the two? It is quite difficult for Peshawar to leapfrog Lahore at the moment, but obviously it's a huge advantage, as we all know, to have those 2 chances to get to the final. But again, at the very last sort of group game, you don't want to falter here, because once you go into that playoff, yes, it's a new game, yes, we say that all the momentum didn't finish, but you still look back at the very last game that you have played. So you go into the final with a playoff is a feel-good factor. Well, let's have a look at the points table, how things are standing at this point of time with all the teams. Multan Sultans are obviously leading the charts. They are the table toppers. And then you've got Qalandars at 12, Peshawar Zalmi at 10. But the 4 spots have been sealed now with obviously the top 2 teams having an advantage of winning the next game and going straight into the finals. Let's also have a look at the playoff tree. We know Multan Sultan is right there at the #1 position, so they will have a second chance for the qualification. But David, if I bring you in, these 2 sides playing, who do you see finishing off 1-2? Well, I suspect, as Baz was saying, I suspect that the Qalandars have enough in hand, even if they lose by a small margin tonight, any sort of margin, they will still be number 2. So I'm very much expecting Sultan's Qalandars to be in that first match. That leaves Zalmi, they'll be playing in the Eliminator 1. But I mean, the thing is, the one thing I find important, or I think is important, is that even though you have these extra chances potentially, sides like to keep winning. It's a very, very good habit to have. So yes, if you have the extra chance, if you lose in that first qualifier, nice to have what you might call a safety net. But the best thing to have is winning form all the way through, get to the final, and then try and save your best for last. Well, one man who's sort of helped Lahore Qalandars' journey so far has been Fakhar Zaman, and he also features in our sparkling moments of the day. Well, yeah, he's been one of the form batsmen of HBL PSL 7. From my own view of him, he's been playing as well as I've ever seen him. He's probably missed out in 1 innings, no more than that. He is so important to the way both that they compile their runs and the speed at which they get them, because he hits the ball 360. So if he fires again, any game, whether it's tonight or over the next couple of games, then they always get off to a good start. Okay, we talk about the leading run getters. Let's have a look at this chart over here. The graphic shows us how good Fakhar Zaman has been throughout the tournament. Yeah, leading run getter, 521. He's been consistent and he's played a few different roles. He's actually power hit or got them off to a flyer and then sort of batted through the innings. Last time around, he actually played second fiddle to Brook. And then you've got Rizwan and Shan Masood. So those 3, it's very difficult to pick out one of them being the best batter of the tournament, because those 3 have been in sublime form all the way through. When you talk about sublime form, one guy who's missing today from Lahore Qalandars, of course, is Rashid Khan. He's not playing. Plenty of withdrawals from Peshawar Zalmi as well. How is that going to impact the game, David? Well, yeah, Rashid is unique. He is very, very special. I mean, time and time again, we see him, especially in the middle overs,
deceiving batsmen, picking up wickets, run rate drops, and Qalandars normally gain control of the game in those middle overs. So yeah, it's a shame, and also on the entertainment level. You know, for the rest of us who might be neutral, a shame not to have him here, but they have replacements. Fawad comes in who can bowl not quite the same sort of magic, but they have a sort of kind of like-for-like replacement if they need it. Okay, final day of the round games, and we've got an amazing encounter right ahead of us. But before that, we'll take a short break. When we come back, Uruj Mumtaz will tell us how to catch. Welcome back to the pitchside studio. Plenty to look forward to in today's game. It's Lahore Qalandars taking on Peshawar Zalmi. Now, we've seen some brilliant catches in this tournament. It's time to head over to Uruj Mumtaz, who's there with some catching drills. Right, so today we're going to talk about some basics of fielding, and there are multiple disciplines. Obviously the close and slip catching, which requires your reflexes to be really quick, but most important, the inner ring fielding, pointer, key position, extra cover, mid wicket, and then the deep fielding as well, where you need to make ground and sort of stop the boundaries and do high catches as well. But today I'm just going to talk about a few basics. So get into a reasonably good position with your feet and you're equally balanced in the center. And then importantly, you can't stay on the heels of your feet because that doesn't allow you explosive movement. And in this position, so you're low, which is the key, because this position allows you to keep your head still and move explosively, whether it's laterally, up or down. Now, there is a bit of a debate whether you catch reverse cup or conventional. I feel it's a personal preference because I've seen the great Ricky Ponting go really down with reverse cup as well. So just on all of those points, we'll try and do a few basic tips here, because for all of you kids, you can practice this at home. So I've got a few friends throwing some balls. Let's see if I can show you what I've just said. So low balanced base, hands in a good position, and eyes most importantly on the ball. And that allows me to move laterally very well as well. Now this one, I've gone reverse cup low, but because I've gone low, I've managed to take this one. And again here. And like that. So just basic quick drills coming to you, which can have your reflexes. Oh, I wish I'd had that one. But I hope you've enjoyed these basic trips and you can try this at home. No match pressure and a tennis ball. So, but well done. We get the point. Well done. This is how you actually catch. We have seen some great catches though in the tournament HBL PSL 7 starting from Karachi. Let's have a look at that and guests will talk about it. What do they feel about certain catches? Let's start with David. Well, yeah, this is mighty clever. It's all about awareness, knowing where the boundary is, and being tall in that case. Tim David obviously having the advantage of height. This is just natural brilliance. Keeping an eye on the ball, athleticism from Baba, and making sure that when you hit the ground, you don't let it go as well. And that's, well, instinctive. There's nothing more than that. It's absolutely instinctive. And the high ones, well, they always get hearts aflutter, don't they? When it's going up in the air, sometimes you have too much time to see it. On the boundary again, this is brilliant because those low ones are so hard to take. You've got to move quickly. Shan Masood saw that straight away. Moved quickly initially, got his hands low, deceived the third umpire. That's also the key sometimes. I mean, that was absolutely clean. One of the things that really bugs me actually is when the third umpire isn't quite sure when it's referred, and we all know it's out. But those were a series of brilliant catches. They certainly were, David. But I mean, we've seen a variety of catches, Bazil. I mean, you've played a lot of cricket. Which one did you find to be the toughest one? You know, there's obviously the high catch, the low diving one. Which is actually the most toughest catch? Now look, the skill that they have of actually catching it and going out of the boundary and then being aware of that, that has come in recently. That is phenomenal. That's something we've never seen before, and it's just now the norm. The other catches which are really difficult are the ones where you dive forward because you're aware of your teeth. If you don't get it right, it's straight to Aruj. She's a dentist, as you know. It's straight there. But I tell you what, I'll tell you something boring just to keep your guys down to the ground. These guys practice hours upon hours and upon hours. So fielding is more about repetition than anything else. Slip catching, long catches, these guys practice it all day, all night, and that's why they're so good. It's not just like Sikandar, who comes here and just does the show and goes back. They practice. It's too loud here. I don't hear anything. Anyway, thank you, Bazil. Thank you, David. We'll catch you guys later.
Time for us to take a break. When we come back, we'll talk more about match 30, Lahore Qalandars versus Peshawar Zalmi. Well, back at the pitchside studio और दो नए गेस्ट्स मेरे साथ मौजूद हैं, मरीना इकबाल और अरूज मुमताज। अरूज, कैचिंग ड्रिल्स तो हमने आपकी देखी, बड़ी ज़बरदस्त, आखिर में एक कैच भी ड्रॉप किया, लेकिन मेरा ख्याल है जुगतबाजी यहाँ रहने देते हैं। ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी भी कुछ चेंजेस हैं, कुछ विड्रॉल्स हैं, कोई ऐसी वीकनेस नजर आई है आपको उनकी टीम में? कलंदर्स की तो हमने बात की ही है कि राशिद खान नहीं होंगे, उनकी टीम में क्या कोई लगता है कि ऐसी कोई वीकनेस है जो कि अपेरेंट है? देखिए, पेशावर को आई थिंक जो सबसे बड़ा हिट होगा वो उनके मिडिल ऑर्डर में होगा। जब से इन्होंने हारिस को इंक्लूड किया है, आई थिंक दैट्स बीन एक्सीलेंट अप टॉप जज़ाई के साथ, मगर जो पेशावर ज़ल्मी का मिडिल ऑर्डर है, आई थिंक वो ऑन एंड ऑफ चला एंड इट्स हेवीली रिलाइड ऑन शोएब मलिक। तो वहाँ पर जो है, अब चूंकि प्लेयर्स की कुछ कमी भी है, उसको वो किस तरह फिल इन करेंगे, आज इनके लिए अच्छा मौका है, कंसिडरिंग येस आई नो प्ले ऑफ में दे वांट टू फिनिश इन अ पोजीशन, बट आई थिंक दैट्स समथिंग दैट दे कैन वर्क ऑन। लाहौर कलंदर की अगर हम बात करेंगे तो लाहौर कलंदर ऑफ कोर्स एक ऐसी पोजीशन में है जहां हम सोच सकते हैं कि दे हैव अ बेटर चांस ऑफ फिनिशिंग 1-2, लेकिन वही अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, राशिद खान की एब्सेंस और वो 4 ओवर फवाद को अगर वो खेल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो। बिल्कुल होंगे, बहुत वाज़ेह फर्क आ जाएगा, क्योंकि स्पिन मिडिल में आके जो राशिद खान जिस तरह की बॉलिंग करते थे, वो सिर्फ ना ये कि रन रेट नीचे आ जाता था, विकेट्स भी ले लेते थे, तो वो डबल एडेड प्रेशर आ जाता था। और आई थिंक कि फ़खर पे अगेन बहुत बड़ा हेविली रिलाई करेंगे, उसके साथ किस तरह दूसरे लोग स्टेप अप करते हैं, ये भी आज बहुत ज़रूरी है। चले, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, हमेशा गद्दाफी स्टेडियम ज़बरदस्त ही लगता है, और मौसम जो है वो भी बहुत बेईमान ही है लाहौर में। तो चलते हैं एरन हॉलैंड की तरफ, हु इज देयर विद द वेदर रिपोर्ट। Oh, Zainab, my behen, it's so good to see you back in the studio. We missed you, and oh my gosh, I miss being back out here at Gaddafi Stadium. The atmosphere is absolutely awesome for tonight's last of the round games. Let's take a little look at what we can expect from the weather today. Currently a gorgeous 21 degrees, beautiful balmy conditions, getting down to 15 degrees overnight, 46% humidity and a light 2km/h breeze. So absolutely stunning conditions for a game of cricket. Can't wait to see how this one turns out. राउंड का आखिरी मैच और पिच कैसा खेलेगी, बाजिल खान हमको बताएंगे, उनको ज्वाइन करते हैं। It's a bit of mixed bag here at Gaddafi Stadium with the pitches. We've seen a lot of big scores, but I think it's more to do with the dew. If there's formation of dew, the ball slides on and it's much better to hit through the line. If there's no dew, it sort of sticks in the pitch. The spinners have got a say here. The ball has gone off the straight. Last night with Imran Tahir, he flighted the ball up and slowed it up, but look at the length, it's not that full, it's just short of the batsman. Then we go to Dawson, who's about 10 k's quicker than Imran Tahir, so his length is much shorter. He's quicker, but is slightly more short than Imran Tahir, and that doesn't allow the batsman to hit through the line, and the ball almost sort of stops at you. And that's why it's difficult then to launch them down the ground. And when the ball is dry, the spinners come into play. But the most important thing is the length. Even for the faster men, it's that shorter length. You want to be short rather than full, because full is easier to hit. Tonight, there's quite a bit of sheen on the pitch. It looks like it's well rolled in, and maybe the ball might just come on to slide onto the bat a bit better. But still, you want to win the toss and maybe put runs on the board, because that's how it's going. But to be honest, what we really want is a super over. Well, that's exactly what we need in this HBL PSL 7, a super over. अरूज, अभी तक जो है एक चीज बाकी है इस पूरे टूर्नामेंट में, और वो है सुपर ओवर। अभी तक वो देखने को नहीं, और अब बाजिल ने कह दिया है, क्योंकि हमें पता है कि ये सुपर ओवर मास्टर हैं। पिछले साल भी हमने देखा, जब ये कहते थे हो भी जाता था, और अब इन्होंने लाइव पिच रिपोर्ट पे कह दिया। सो दिस टुडे माइट बी द डे। चलिए, हमने पिच का थोड़ा सुना। कल हमने जो देखा, जो स्पिनर्स को दिखाया है कि लेंथ की तो बात हुई है, लेकिन जो इमरान ताहिर ने स्पीड वेरिएशंस की थी, बड़ी काम आई थी। अगर तो पिच ऑन अ स्लोअर साइड है तो आई थिंक वो फिर हर बार काम आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। आई थिंक अगर नहीं भी है तो भी पेस वेरिएशन हमने देखी है लाहौर में जितनी इफेक्टिव रही है, वो कराची में नहीं थी, इवन पेसर्स की भी। लेकिन अगर पिच और स्लो है तो बैटर्स के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर पेस वेरिएशन होती है तो स्लोअर वन करेंगे तो वो और ज़्यादा फंस के आता है। ग्रिप भी हो रहा था और लेंथ से रीड करना भी मुश्किल था। बीच में जब फास्टर वन कराया है तो क्योंकि बैटर के माइंड में होता है कि स्लो आ रही है, तो वो उसको भी नहीं रीड कर पाता। तो आई थिंक बड़े इंटेलिजेंटली स्पिनर्स ने जो है वो बॉलिंग कराई है, और आई थिंक कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी अगर इस चीज़ को
मद्देनजर रखें तो आसान नहीं है आप स्कोर करना। अरूज, आसिफ अली ने भी बात की थी अपने इंटरव्यू में पिछले कि किस तरह से बॉल थोड़ा लो रह रहा है और इजी नहीं है इतना बैटिंग करना, तो क्या लगता है कि ये पिच भी उसी तरह अभी एक्ट आउट करी है? क्या वेरिएशंस इज दैट, डू यू थिंक दैट्स द की ऑन दीस पिचेस? आई थिंक जरा बाजिल ने भी कहा कि रन्स ऑन द बोर्ड, जो हमने देखा है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट, रन्स ऑन द बोर्ड इज हेल्पिंग, मगर जो स्पिनर्स के और इवन सीमर्स के लिए जो लेंथ है, आई थिंक मार्जिन ऑफ एरर कम है, बिकॉज देयर इज समथिंग इन ऑन द पिच दैट इज ऑन ऑफर। तो उस लेंथ को अगर हिट करें स्पिनर्स एंड सीमर्स, नबील ने बहुत अच्छा किया था ये, और राशिद एंड इमरान ताहिर, तो देखना पड़ेगा। इवन डॉसन येस्टरडे आई थॉट वाज एक्सेप्शनल, वेरिएशन से खेला बट लेंथ वाज की। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखेंगे कि दोनों टीमों का HBL PSL में हेड टू हेड कैसे रहा। वेलकम बैक वंस अगेन टू द पिच साइड स्टूडियो। बात कर रहे हैं मैच नंबर 30 की। HBL PSL में इन दोनों टीम्स के बीच किस तरह रहा मुकाबला, आइए देखते हैं हेड टू हेड में। ओवरऑल अगर आप देखें तो 8-6 से लीड हासिल है पेशावर ज़ल्मी को। 14 बार इन दोनों का मुकाबला हो चुका है, लेकिन पिछला मैच जो खेला गया था इन दोनों टीमों के दरमियान कराची में, वो लाहौर कलंदर ने जीता था। आप देख सकते हैं कि खवातीन में घिराया हुआ है। मेरा हेड टू हेड तो बिल्कुल ही फेल हो जाएगा, मैं बात ही नहीं कर सकता। चले मैं क्विकली आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि हमने देखा अभी तक जो नौयत रही है लाहौर आने के बाद या रिसेंटली के टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं लोग, आखिरी राउंड का मैच से कुछ डिफरेंट होगा या वही सही रहेगा, जीतो और बैटिंग करो? देखिए प्रेशर होता है जब भी स्कोर लगा हो, और मेरा ख्याल है कि अभी यही चाह रहे होंगे क्योंकि पिचेस दोबारा रीयूज हो रही हैं तो स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, अच्छा बैट पे आ नहीं रहा, तो आई थिंक प्रेशर डालना ज़रूरी है। अप फ्रंट आप स्कोर करें, आपको दूसरी टीम की स्ट्रेंथ का भी आइडिया होना चाहिए, उसके बाद स्कोर लगाएं एंड बैक के बॉलर्स उसको डिफेंड करने जाएं। अच्छा, लाहौर कलंदर्स का एक जो चीज़ नज़र आ रही थी पहले वो ये था कि शायद फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है, बट उसके बाद हैरी ब्रुक ने आके स्कोर भी किया, तो अब दैट वुड गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि नहीं और भी उनके प्लेयर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई थिंक वो ज़रूरी भी था क्योंकि हमने देखा कि फ़खर आई थिंक 9 में से सिर्फ 2 ही इनिंग्स में फेल हुए थे और उसमें से एक में वो मैच भी हारे, तो हैरी ब्रुक का स्टेप अप करना, बिकॉज हफीज़, कामरान, गुलाम उस तरह से शायद लंबे रन, तेज़ रन नहीं कर सके। आई थिंक ब्रुक की जो बात है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट राशिद खान बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बट जो ब्रुक ने बीच में आई थिंक इनिंग्स की, उसे लाहौर कलंदर्स को बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी हैरी ब्रुक की, लेकिन अभी तक जो हमने देखा है कि बैटिंग फर्स्ट सीम्स टू बी द फेवरेट ऑप्शन, क्योंकि बॉल जो है वो लो रह रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। वी रेडी विद द टॉस, ओवर टू बाजिल खान। Match 30 and it's time for the toss. Last of the group games, so we've got Shaheen Shah Afridi, Wahab Riaz, the Dapper Ali Naqvi match referee. Shaheen has the coin. Heads is the call. It's the tails. Heads है, tails है. हेड्स है, टॉस जीत गए तो क्या करेंगे? बैटिंग फर्स्ट। थोड़ा ट्रेंड यही है कि रन्स ऑन द बोर्ड और फिर डिफेंड करें। जी देखा हमने थोड़ा सा कि विकेट बाद में जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता, बैट पे बॉल अच्छे तरीके से नहीं आता, सो दैट इज़ एन एडिशनल एडवांटेज कि अगर आप अच्छा स्कोर जो है वो बोर्ड पे टारगेट देते हैं तो फिर आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। ड्यू नहीं है, वो भी एक फैक्टर आपको लगा क्या? देखिए ड्यू का जो शक था शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि अर्ली डेज थे, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हो रहा है और ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं गिर रही कि हम लोग कहें कि बॉल जो है वो इतना ज़्यादा वेट हो रहा है या हमें चेंज करवाना पड़े या ग्रिप करने में मुश्किल हो। सो होपफुली ऑलवेज आपको पता है कि T20 में रन ऑन द बोर्ड ऑलवेज अ प्रेशर। आपकी टीम में कोई चेंजेस? 6 चेंजेस है हमारी टीम में, बस इसी तरह रखे 6 चेंजेस। चले, गुड लक। थैंक यू। शाहीन बॉलिंग पहले, ख्याल है कि स्विंग होगा? आई थिंक बिल्कुल बॉलिंग पहले है, लेकिन अर्ली ऑन स्विंग होता है, उसका एडवांटेज होगा, कोशिश करेंगे कर लिया ब्रेक टू टीम को। कितना नज़र होती है प्ले ऑफ पे, क्योंकि आप पहले से क्वालिफाइड हैं? जी बिल्कुल, बस कोशिश करेंगे जो कॉम्बिनेशन है उसको ट्राई करें और एक अच्छा मोमेंटम जैसे जा रहा है उसको कंटिन्यू करें। राशिद खान चले गए, वो उसकी कमी तो ज़रूर महसूस होगी। ज़रूर, राशिद आई थिंक नंबर 1 बॉलर है, उसकी कमी ज़रूर फील होगी, बट उसको भी बेस्ट ऑफ लक और उसकी जगह फवाद अहमद कर ले। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, ऊपर से फास्ट बॉलर फिर स्पिनर। लाहौर की पिच थोड़ी सी सपोर्टिव है अगर बॉलिंग अच्छी की जाए। आई थिंक बॉलिंग फील्डिंग अच्छी होना तो सपोर्ट करता है और जाहिर सी बात है राइट एरिया पे बॉल करेंगे तो सपोर्ट होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड गुड थैंक यू। So the news here is that Peshawar Zalmi have won the toss and are having a bat. अगर मुझे बता दिया मरीना ने कितने चेंजेस हैं, मैं मोबाइल फोन खरीद के दूंगा। ये
6 चेंजेस हैं उनके, इतना पता चल गया। लाहौर का एक चेंजेस, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वही बात सही है कि पहले बैटिंग करेंगे, रन्स ऑन बोर्ड, क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड थोड़ा डिफिकल्टी हो रही, बल्ले पे नहीं आ रहा बॉल। बिल्कुल ऐसा ही है, और आई थिंक मुझे जो सबसे मज़ेदार कॉन्टेस्ट लगता है ना, वो मोहम्मद हारिस और शाहीन अफरीदी का है, और वो देखना पड़ेगा कि वो उनको किस तरह खेलते हैं। बट ऑब्वियसली आई थिंक लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक भी अच्छा है, तो इनको पेशावर ज़ल्मी को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगेन मिडिल ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि हुसैन तलत अगर आते हैं और शुएब मलिक, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट पावर प्ले हमने देखा है कि लाहौर लेग में पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, रन वाइज भी और विकेट टेकिंग वाइज। अच्छा, ज़ल्मी की तरफ से अरूज अगर एक पॉजिटिव रहा है, मतलब परफॉर्मेंस वाइज पॉजिटिव, दैट्स हाउ आई लाइक टू पुट इट। सलमान इरशाद, डेथ बॉलिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही है, तो एटलीस्ट ये चीज़ है कि सिर्फ वहाब रियाज उनके पास एज अ पेसर नहीं है, दे हैव अदर ऑप्शंस। बिल्कुल, आई थिंक द यंगस्टर हैज स्टेप्ड अप रियली वेल, और आई थिंक उनका जो इकोनॉमी है वो सबसे कम है इन द लास्ट 5, वन ऑफ द लेस ऑन द लेसर साइड है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलिंग में उनके पास वहाँ क्योंकि स्ट्रगल करते हुए नजर आए, कुछ पिछले मैचेस उनके अच्छे तो थे, बट इन द इनिशियल टूर्नामेंट वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते थे। इट्स गुड किस तरह से सलमान इरशाद ने स्टेप अप किया, एंड ही हैज बीन इम्प्रेसिव। भाई लाहौर का मैच हो और शोर ना हो रहा हो तो ये तो इम्पॉसिबल है। देखते हैं और सुनते हैं कि आज फैंस कितने एक्साइटेड हैं। HBL PSL 7 जिंदाबाद। जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तो मैं फ़ैन लाहौर कलंदर का हूँ भी पंजाबी, लेकिन अभी स्पेशल मैं सिर्फ मोहम्मद हारिस की बैटिंग देखने आया हूँ। एमर्जिंग प्लेयर है और इस PSL में वाद प्लेयर नज़र आया जिसने अपनी बैटिंग की सलाहियतों से दिखाया कि पाकिस्तान में एक नया जो है टैलेंट आ रहा है। आज के मैच के लिए टीम लाहौर कलंदर ही है और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त जोश है अंदर। आप देख लें इस वक्त अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और जोश यहाँ पे है। कलंदर होते वो हैं जो जिनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती हारने की और जीतने की। आप इस सीरीज़ में भी देख सकते हैं जिस टीम ने सबको हराया और लाहौर कलंदर ने उसको मात दी। वैसे तो राशिद खान चले गए हैं, लेकिन हमारी लाहौर की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं मिस कर रहा हूँ डैरन समी को, जो कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को इतना सपोर्ट किया, और माय फेवरेट टीम पेशावर ज़ल्मी है और हमेशा पेशावर ज़ल्मी ही रहेगी। Well, back at Gaddafi Stadium, and just a quick reminder that Peshawar Zalmi has won the toss and they have elected to bat first. इनके काफी changes भी हुए हैं। आइए टीम्स देखते हैं सबसे पहले, और पेशावर ज़ल्मी की टीम पहले अरूज। बिल्कुल, जिस तरह से वहाब ने टॉस फेंका कि 6 चेंजेस इन्होंने आज किए हैं, तो कामरान अकबल और हैदर अली आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोनों पिछला मैचेस नहीं खेले हैं, तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन कर सकें, कंसिडरिंग जो प्लेयर्स मिस आउट करें। अमाद बट, खालिद उस्मान लेफ्ट आर्म स्पिन करेंगे, और मोहम्मद उमर आई थॉट ही वाज इम्प्रेसिव, तो उनको लिए भी एक अच्छा मौका है इमर्जिंग कैटेगरी में, और अरशद इकबाल को भी एक मौका मिलेगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड बैलेंस साइड। पेशावर के फोर्स चेंजेस, लाहौर कलंदर के तो मजे हो गए मरीना। ये देखें कैप दे रहे हैं अरशद इकबाल को, काफी वेट किया इन्होंने, और ऑफ कोर्स एक ही फॉरेन प्लेयर खेल रहा है ओवरसीज प्लेयर इनकी टीम में आज, वो हजरतुल्लाह ज़ज़ाई हैं। तो आइए अब देखते हैं लाहौर को। लाहौर में एक ही फोर्स चेंज है, क्योंकि राशिद खान नहीं अवेलेबल, तो फवाद अहमद आए हैं, लेग स्पिनर ही हैं वो। अब देखना ही होगा कि कंडीशंस का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। बट ये सुपर टॉप ऑर्डर देखें तो फ़खर जमान, फिल सॉल्ट, उन पे काफ़ी अभी रन डिपेंडेंट है। उसके बाद कामरान गुलाम अच्छा खेल रहे हैं, मोहम्मद हफीज़ पे रन है, और हैरी ब्रुक ने जिस तरह की शानदार इनिंग्स खेली थी, पेशावर ज़ल्मी को देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली अटैक उनका शाहीन अफरीदी को अगर सर्वाइव कर लिया पेशावर ने, तो आई थिंक एक अच्छा टोटल पोस्ट कर पाएंगे। हारिस रऊफ ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, और ये कैप दी जा रही है फवाद अहमद को, और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब जिस तरह की पिचेस वहाँ इतनी टर्निंग नहीं, लेकिन लीग खेलते रहे, एक्सपीरियंस काफ़ी लेके आए हैं। एंड आई थिंक ये ओवरऑल भी स्पिन डिपार्टमेंट में भी और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी हेल्प आपको करता है। आज इनको भी कैप देनी चाहिए थी, HBL PSL 7 आप लोगों ने। एक्सपर्ट प्रेडिक्शन लेते हैं, सबसे मुश्किल मरहला अरूज के लिए आए। चलिए आई गो एंड स्टार्ट विद मरीना। बताइए क्या कौन जीतेगा और क्यों? आई थिंक लाहौर काफ़ी बैलेंस साइड है। हैरी ब्रुक का जिस तरह स्कोर किया है, तो आई थिंक बाकी बैटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। फ़खर जमान इज बैक इन निक,
बॉलिंग साइड स्ट्रॉन्ग है, अब फ्रंट शाहीन अफरीदी को फेस करना आसान नहीं है, तो आई थिंक लाहौर इज गुड। अरूज जो है वो अपना सर नॉट कर रही हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि सर क्यों अपना ऐसे शेक कर। आज नहीं आई थिंक आज पेशावर जो है बाजी ले जाएगा, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज मिली है ना, एक तो दे हैव नथिंग टू लूज। आई नो के प्लेऑफ्स का मामला है, बट जो ये बहुत सारे प्लेयर्स जिनको मौका नहीं मिला है, तो आई रियली फील आज पेशावर जो है बाजी ले जाएगा। मरीना यू आर ऑन। इंटरेस्टिंग। चलिए, मुझे तो यकीन नहीं उन्होंने पेशावर बोल दिया, लेकिन चलें। एरन हॉलैंड वेट कर रही हैं और उन्होंने पकड़ा है एक प्लेयर को जिसने क्या परफॉर्मेंस दी थी, सेंचुरी बनाई, हैरी ब्रुक। लेट्स जॉइन देम। Lahore Qalandars are flying high just at the very right time of the competition, and a lot of that was due to last game to this guy right here, Harry Brook. Absolutely sensational. 102 off just 49 balls. What was the reception like from everyone back home? Yeah, I got a lot of messages saying well done. I feel like I've been on my phone quite a bit the last few days, so it's quite nice to be out here again and trying to play another game of cricket tonight and get another win on the board, hopefully. I think what people were remarking about mostly as well is just how mature an innings it was, considering you came in at 3 for 12 or something diabolical like that. Have you sort of had a chance to reflect on your mindset and sort of how you managed to go about that innings a little more? Yeah, a little bit. I tried to write things down. I wrote a few notes down before the start of the competition, the way I wanted to go about it and the amount of runs I wanted to score at. So yeah, I'd give myself a little tick in my notebook for that, and but like most people think it's just one game, it's gone now, and now we're on to the next game, and there's I can only do what's in front of me now. Absolutely, and we loved your celebration as well. Do you ever give any thought to how you'd celebrate 100? Yeah, I used to do that quite a bit before I got to 100, thinking how am I going to do this, like run and jump or... But no, I try and keep it low key. That was probably one of my biggest celebrations I've had having 100, so yeah, it was a really good moment, and thankfully I did it in front of a really good Lahore crowd. A lot of pressure actually, isn't it? You're like, oh gosh, what am I going to do? And all of a sudden the moment hits you, but you did a great job. We loved watching your celebration. Looking ahead, you guys have finished in the top 2 now, which is fantastic. And I suppose, how's the team feeling and looking ahead to your playoffs now? You've got qualifier 1 coming up very shortly. Yeah, absolutely. I don't think we're thinking about that yet. We've still got this game tonight, and like I said before, you can only handle what's in front of you now. So if we think too far in front of ourselves, we will stop thinking about this game, and this is probably more important at the minute. So yeah, we're definitely going to give our all this game and try and get another win on the board. Winning's a bit of a habit, so hopefully we can keep that habit up. Sounds like really sound and solid advice, just one game at a time. Well, thank you so much for your time and your insight, and we can't wait to see you later on tonight. Thank you very much. Cheers. जी बिल्कुल, हैरी ब्रुक इज सच एन एक्साइटिंग प्लेयर, और कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में। इज द यंगेस्ट सेंचुरियन इन द हिस्ट्री ऑफ HBL PSL। इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया इंग्लैंड के लिए इन जनवरी 2022। ही इज आल्सो कैप्टन द इंग्लैंड साइड इन द ICC Under-19 World Cup in 2018, and he made his first class debut in 2016 playing for Yorkshire against Pakistan A। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी इनिंग्स रही है अरूज, जो हमने देखी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट। ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट प्लेयर है, बिल्कुल कंप्लीट प्लेयर है। अगर आप नोटिस करें तो दे वो ऑल प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, अपने आप को थोड़ा सा रूम ज़रूर देते हैं लेग साइड पे, बट अपनी रीच का फ़ायदा उठाते हैं, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आई थिंक दैट वाज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट। इट वाजंट ऑल स्लॉगिंग, बट जो कन्वेंशनल क्रिकेट के शॉट्स इन्होंने खेले और जो इनका कॉन्फिडेंस है, तो आई वाज थॉरली इम्प्रेस्ड बिकॉज ही सीम्स लाइक अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट यंग मैन। एक और प्लेयर है जो हम बात कर रहे हैं बैटिंग की, जिसने बड़ा इंप्रेस किया है इमर्जिंग कैटेगरी में, और हमने काफ़ी बार बात भी की है, मोहम्मद हारिस। और मैं मरीना को लेके आऊँगा इसमें कि जिस तरह से उन्होंने सहारा दिया, जो पावर प्ले है उन्होंने ओन कर लिया है वो जोन के, मैं इसका ख्याल रखूँगा, बाकी आप लोग देख लें। देखिए, इस पे सबसे अच्छी बात ये कि एक तो पहली बॉल पे आके उनका माइंड क्लियर होता है, और आई थिंक थिंक टैंक्स और कैप्टन ने भी ये रोल दिया हुआ कि जाके अपनी क्रिकेट खेलो। ही इज नॉट अफ्रेड टू ट्राई एनीथिंग डिफरेंट, चाहे कोई भी बॉलर हो, उन्हें पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैंने किस तरह इस पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, और काफ़ी इनोवेशन इनके पास है। और अगर ऐसा एटीट्यूड हो कि आई वांट टू बी द बेस्ट, तो वो अभी जाहिर कर ही रहे हैं। आई थिंक ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। लेकिन ये पेशावर ज़ल्मी का जो प्रॉब्लम चल रहा था, वो ये कहते हैं ना, छोटा पैकेट आगे बड़ा धमाका करता है, वो इन्होंने कर दिया। अच्छा अरूज,
क्विक थॉट्स क्या लगता है कितना पोस्ट करना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को टू स्टे इन द गेम? देखिए आई थिंक एनीवेयर बिटवीन 170 and 80 क्योंकि विकेट स्लो है, लो रह रहा है, जिस तरह बाजिल ने भी कहा स्पिन ऑफर होगा थोड़ा सा, 170 180 शुड बी अ गुड स्टोर। इतना शोर है यहाँ पे, पक्की बात है पेशावर ज़ल्मी 170 180 और वो आज जीतेंगे। चलिए, मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर वेलकम करूंगा ज़ैनब को। आई लवली टू हैव यू बैक ओवर हियर। प्लेऑफ स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन आखिरी मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम मुल्तान से खेलेगी और कौन सी टीम खेलेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो याद रहे ताकि कल पलट ना जाए शाम तक। उरूज ने कहा है पेशावर, मैं भी वैसे पेशावर ही कह रहा हूँ। थैंक यू लेडीज, लेट्स हैव सम फन, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे इस मैच को HBL PSL 7 में।